Class 12th Commerce, subject Accountancy, chapter number 7, issue of shares. It is lecture number 2. See, today I am starting journal entries of issue of shares. First of all, listen. Shares can be issued either at par or at premium. Shares issued at discount, they are not in the part of syllabus. First of all, entry on receiving applications. First journal. When any company receives application money, in that case, bank account is debited. Journal entry number 1, it is bank account debit to share application account. See, you will take the shares and then you will multiply that shares with the amount of application money. The application money must be deposited by the company in a scheduled bank. Scheduled bank is the bank which is decided by the board of directors. It can be any bank. The following entry is made by the company on receiving application. This I have already explained. It is bank account debit to share application. After that, share application amount is transferred to share capital account. See, second journal. It is entries on allotment. Second number, application money is a part of share capital of the company. And as such, when the directors allot the share application money that is transferred to share capital account. Listen, this entry number 1 I am doing for the transfer of share application money to share capital. See, entry number 1, second part का जो entry number 1 है, see, share application account debit to share capital account. And now see the narration. Application money on allotted shares transferred to share capital account. Second number, see what is being explained in second number. When the shares are not allotted to applicants, in that case, what will happen? See, the shareholders, they have given share application money to the company. In that case, their money will be returned back to the shareholders. Second part. Sometimes the directors do not allot any shares to some of the applicant. The reason can be any. See, the reason can be any. Why is the money being just given back? Why are we not allotting them shares? It depends on company. The application money of such applicants is returned to them. We are giving back their money to them. Then see what will be the journal entry. The journal entry will be share application account debit to bank. And now see, bank is credited because now the payment has been started. You are doing the payment. Bank will be credited. Bank comes in personal account. Debit what comes in and credit what goes out. Share application account debit to bank. Narration. Application money returned on unallotted shares. Now move on to third number. And now see, in third number, basically what is done? Now the company is making due allotment money. It means they are asking their shareholders to pay them a share allotment money. Third number, those applicants who are allotted shares, they are sent the letters of allotment in which the number of shares allotted and the amount due on allotment is mentioned. As soon as the allotment letters issued, the allotment money becomes due and becomes the part of share capital. And now see, in this journal entry, you are making due share allotment money. Journal entry will be share allotment account debit to share capital account. Amount due on allotment on dash dash shares on dash dash per share. It can be any cost, rupees 10, 15, 5, whatever. And see, now in fourth number, you are receiving allotment money. It will be bank account debit to share allotment account.
and the narration, amount received on allotment, on जितना भी shares है, जितना भी आप allotment पर पैसा ले रही हैं, those will be multiplied. And now you are making due first call. Fifth number journal, when shareholders are informed to pay the first call. Share first call account debit to share capital. First call is due on dash dash shares at the rate of dash dash per share. Whatever is the money of first call, that will be taken. The number of shares from which you will get share first call money, those shares also will be taken. Sixth number, on receiving of first call money, now you are receiving the first call money. In that case, see the journal entry will be bank account debit to share first call. फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, जितना भी शेयर्स थे, जितना भी उनका फर्स्ट कॉल मनी था, दैट इज रिसीव्ड. एंट्रीज ऑन सेकंड कॉल, व्हेन शेयर होल्डर्स दे आर इन्फॉर्म्ड टू पे सेकंड कॉल, उनको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं. इन्फॉर्म करने में जो वर्ड्स आप लिखेंगे, दोज विल बी सेकंड कॉल ड्यू. एंड नाउ लिसन, what will be the journal entry? Share second call account debit to share capital account. Second call due on whatever are the shares and whatever is the money that the company will receive on second call. Eighth number, now the second call money is going to be received. आप उसको receive कर रहे हैं. Bank account debit to share second call. The narration will be second call money received on dash dash shares at the rate of dash dash per share. Similarly, the entries for other calls also may be prepared. Generally, what happens? It remains application money, allotment money, first call and second call. It can be first call and final call. It depends. It depends. You should know how to journalize. Whatever are the quantities of the calls does not matter. Again listen, 8th number जो हमने journal बनाया है, that is done for the receiving of second call money due bank account debit to share second call. Illustration number 5. Pawan Limited invited application for 30,000 shares of rupees 10 each. Payments were to be made as follows: rupees 3 on application, 3 on allotment, second rupees 2 on first call, and rupees again 2 on final call. All the shares were applied. You are required to prepare journal entries. Listen, in this slide I have taken, see, illustration is explaining everything, but I have taken only journal entries. All the shares were applied. You are required to prepare journal entries and then ledger accounts and show the share capital in the balance sheet of the company, assuming that all sums due on allotment and calls they have been received. Share issue expenses, they are of rupees 8,000. Rupees 4,000 fully paid shares were also issued to the promoters for their services. It means rather than to pay money to promoters, the shares were issued and those shares were fully paid. फुली पेड का मतलब यहाँ पर जानिए बेटे, 10 रुपीज का शेयर है, 10 का 10 हमने उनसे ले लिया, मतलब 10 का 10 हमने उनको दे दिया. 4,000 into 10, that will be 40,000. Promoters are those persons, those who bring the company into its existence. Now see journal entry. On date of receiving applications, bank account debit to equity share, application account 30,000 हमारे shares हैं, into 3 rupees they were on application, 90,000 हो गया. Money received on application for 30,000 shares at the rate of rupees 3 per share, 90,000. On the date of allotment, now see, now what will happen? This application money will be transferred to capital account. Equity share application account debit 90,000 to equity share capital account 90,000. Transfer of application money to share capital account. Now see,
And now allotment money, you will ask for allotment money from the shareholders. On date of allotment means आप allotment उनको ड्यू कर रहे हैं, आप allotment उनको बोल रहे हैं कि दीजिए अपने shareholders को. See, equity share allotment account debit 90,000 to equity share capital account 90,000. Allotment money due on 30,000 shares at the rate of rupees 3 per share. दोबारा देखिए बेटा एक बार. Bank to share application 90,000. Then share application to share capital. Amount has been transferred to share capital account. Then allotment आपने मांगा. Share allotment to share capital. Now you will receive this allotment money. On the date of receiving of allotment money, bank account debit to equity share allotment, it is 90,000 and 90,000. On the date of call, now you are making due first call money. Equity share first call account debit 60,000 to equity share capital account 60,000. First call due on 30,000 shares at the rate of rupees 2 per share. On the date of receiving of first call money, bank account debit to equity share first call account 60,000 each. Amount received on first call. Now you are asking for the money of final call. देखिए कई बार फाइनल कॉल लिखा होता है, कई बार सेकेंड कॉल लिखा होता है, इट डिपेंड्स. ऑन डेट ऑफ कॉल, equity share final call account debit 60,000 to equity share capital account 60,000. Final call due on 30,000 shares at the rate of rupees 2 per share. यानी कि जो हमारा कॉल मनी है rupees 2 per share है. फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी देखिए हमारा कितना था, 2 रुपीज पर शेयर था. इट डिपेंड्स. ऑन रिसीविंग ऑफ फाइनल कॉल मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60,000 each. Amount received on final call. And now share expenses were done. अब यहाँ बात को बड़े ध्यान से समझिए. Share expenses, share issue expenses, whatever is given in the question, these expenses are written off from securities premium reserve if SPR is given to you. If SPR is not given, in that case amount will be paid in cash. Share issue expenses account debit 8,000 to bank account 8,000. Expenses incurred on issue of shares. अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए बेटे. सी, हमने प्रमोटर्स को 4,000 शेयर्स दिए थे फुली पेड. इट इज इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, खर्चा डेबिट हो गया. बट बाय डूइंग दिस खर्चा योर शेयर कैपिटल इज इंक्रीजिंग, इसलिए आपका शेयर कैपिटल आपकी क्रेडिट हो गई. Whenever share capital increases, share capital is credited. Journal entry now see. Incorporation cost account debit 40,000, it is 4,000 into 10. Fully paid हमने उनको शेयर्स दिए थे. To equity share capital account again 4,000 into 10, 40,000. Fully paid shares issued to promoters for their services. And now see, when the shares are issued at premium, when a company issues a share at a premium which is above its face value. फेस वैल्यू का मतलब है जितने में हमने किसी भी सिक्योरिटी को इशू किया है. अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू किया है, इट इज नोन एज शेयर सिक्योरिटीज और शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम. When a company issues a share at a price which is above its face value, it is said to be issued at premium. And now see the example. The cost of one share, the face value of one share is rupees 10 and that has been issued at rupees 12. It means rupees 2 will be the premium on the share. There is no legal restriction on issue of shares at premium. Again, it depends on board of directors. It depends on the goodness of any company. If the company is really very good, everybody will wish to purchase the shares even at premium. In case of premium, shareholder has to pay more money rather than to 10. They will have to pay 12 rupees. It is an example. It can be any money. 10 का 20 हो सकता है, 20 हो सकता है. It can be any amount.
The premium on issue of shares is a capital profit. And now listen, this is very important point. Listen very carefully. The premium on issue of shares, it is a capital profit, not a revenue profit. It means whatever amount you receive after issuing the shares at premium, that amount will be your capital profit. It will not at all will be the revenue profit definitely, and as such must be credited to the separate account, and that account will be securities premium reserve account. It must be shown separately in the balance sheet. Listen, a little part of the balance sheet also I have taken. It must be shown separately in the balance sheet on the equity and liabilities side under the heading of reserves and surplus. See, when you issue securities at premium, it is a capital profit, and that capital profit must be credited in securities premium reserve. Now, these are the 5 ways in which you can use securities premium reserve amount. Under section 52(2) of the Companies Act 2013, the amount of securities premium reserve may be used only for the following purposes. It means only these are the 5 ways where that SPR can be used. In other ways, it will never be used. It will be the list. The list is given to you. It is in front of you. ये वो लिस्ट है जहां पर आप SPR के पैसे को यूज कर सकते हैं. इसके सिवाय कहीं और यूज उस पैसे को आप नहीं कर पाएंगे. First number, in writing of preliminary expenses of the company. Whatever are the preliminary expenses of any company. Preliminary expenses ये कब होते हैं बेटा? जब हम कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर के आते हैं. Those all expenses can be written off from the amount of SPR. Second number, for writing of expenses, commission or discount allowed on issue of shares or debentures of the company. Shares और debentures को अगर हमने इशू किया है डिस्काउंट पर राइट ऑफ करने हैं खर्चे, that amount you can use which have you received in the name of securities premium reserve. Meaning that this amount can be utilized in second number. एक बार और देखिए, for writing of the expenses, खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए commission or discount allowed. Whatever the commission, whatever the discount that is allowed to issue shares or debentures, those all expenses can be written off from the amount of SPR. Third number, for issuing fully paid bonus shares to the shareholders of the company. Means whenever the bonus shares are issued, whenever the amount will be utilized from SPR. Listen, if SPR amount is not given, then it will depend on the policy of the company how to issue bonus shares. Fourth number, for providing for the premium payable on redemption. देखिए redemption का मतलब होता है बेटा पे करना. Redemption of redeemable preference shares. आप रिडीम कर रहे हैं, पे कर रहे हैं पैसा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का या डिबेंचर्स का. उनका जो प्रीमियम है, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम, जो प्रीमियम आप रिडम्पशन के टाइम पर देंगे, दैट अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम दिस SPR. Point number 5, for buyback of its own shares means when your shares are issued, when your shares are available at less price in securities market, in that case you can purchase your own shares. Fifth number दोबारा देखिए, for buyback of its own shares and other securities as per section 68 में, whatever the securities you can do buyback, it can be done. शेयर्स का उन्होंने क्लियर लिखा है, बाकी सिक्योरिटी के लिए सेक्शन 68 आप देखेंगे. मतलब इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ओनली दीज 5 पॉइंट दे शुड बी लर्न टू यू. यू शुड अंडरस्टैंड ओनली दीज 5 पॉइंट्स. Accounting entries for the amount of securities premium. Now listen, how the entries will be done when the amount is received of SPR. Listen, the amount of securities premium may be charged by the company on application or on allotment or even with the calls. It means amount of premium can be charged on application, allotment, calls. It depends on the policy of the company. Following entries will be passed if the amount of premium is received along with application money. देखिए यहाँ पर application money के साथ में आपने प्रीमियम भी ले लिया. एक चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे,
whenever, see आपको SPR given है, in that case whenever bank is debited you will not do the pieces of receiving amount. का मतलब कैसे लिखिए, bank account debit to share application account, then share application to share capital to SPR, second number journal. फर्स्ट नंबर में जब उन्होंने बैंक लाया तो SPR को उन्होंने उसमें नहीं दिखाया है, अगली एंट्री में दिखाया है. दिस आई एम सेइंग you will no you will not do the pieces. When bank account is debited you will directly write the amount, you will directly write the main account. SPR आप बैंक अकाउंट डेबिट करते टाइम पर SPR को नहीं लेंगे. फर्स्ट नंबर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. and now see the narration. Share application money received including premium. एप्लीकेशन मनी को आपने प्रीमियम के साथ में रिसीव कर लिया. सेकेंड नंबर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. फिर से सुन लो, बैंक अकाउंट जब आपने डेबिट किया था तो SPR को वहां पर क्रेडिट नहीं किया था. दिस क्रेडिट यू विल डू इन सेकेंड जर्नल, अनदर जर्नल में आप करेंगे. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. If the amount of securities premium reserve is received along with allotment, the following entries will be passed. अब ये देखिए बेटा, जैसे आपने सेकंड जनरल में बनाया था ऐसा ही बना देना है आपने अलॉटमेंट के टाइम पर. Now see, share allotment account debit to share capital account to securities premium reserve account. बैंक डेबिट होगा वहां पर SPR आपका क्रेडिट नहीं होगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा. See, when allotment account is received, when share allotment money is received, amount is received, बैंक अकाउंट डेबिट होकर देखिए यहाँ पर SPR आपका क्रेडिट नहीं हुआ है, सो बी केयरफुल. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, allotment money received including the amount of SPR. Illustration number 6. Spencer Paints Limited, it was registered with the an authorized capital of rupees 50 lakh. It means अपने जीवन काल में Spencer's Paints Limited, they can issue the share capital only of rupees 50 lakh, not more than rupees 50 lakh. And this 50 lakh has been divided into 5 lakh equity shares of rupees 10 each. Out of 5 lakh equity shares, the company issued 2 lakh equity shares at a premium of rupees 3 per share. And that is payable as follows: rupees 4 on application, rupees 5 on allotment including premium. अगर मैं इसका टुकड़े करती हूँ तो now see, it will be 2 plus 3. 2 rupees for allotment and 3 rupees for SPR. Rupees 2 on first call, rupees again 2 on second and final call. All the shares were subscribed and all the money was duly received. Share issue expenses amounted to rupees 75,000, which were fully written off against SPR. से मैंने आपको भी बताया था लास्ट स्लाइड्स में बेटा. Prepare journal entries and bank account. Now see, move on to the solution. Bank account debit to equity share application account, rupees 8 lakh and rupees 8 lakh. Money received on application. Equity share application account debit to equity share capital account. This 8 lakh rupees that you got in this first journal, this amount, share application amount, has been transferred to share capital account. And now see, journal entry: equity share application account debit rupees 8 lakh to equity share capital account 8 lakh. Application money transferred to share capital account. And now in this question, in this illustration, SPR is along with allotment. And now see, equity share allotment account debit rupees 2 lakh, rupees 10 lakh to equity share capital account rupees 4 lakh to SPR to securities premium reserve account 6 lakh. अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ड्यू, यानी कि आपने अलॉटमेंट को प्रीमियम के पैसे के साथ में ड्यू कर दिया. अब पैसा रिसीव करिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट द सेम आई सेड.
कि जहां पर बैंक डेबिट होगा वहां पर एसपीआर आपका क्रेडिट नहीं होगा। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10 lakh each। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ₹4 lakh। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 lakh। मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। बैंक एनओसी आपने मनी को ड्यू किया, नाउ यू रिसीव द अमाउंट ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ₹4 lakh then ₹4 lakh। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ₹4 lakh टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 lakh। मनी ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पर आपने पैसे को ड्यू कर दिया and now you receive the money। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट ₹4 lakh ₹4 lakh each। मनी रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर इशू एक्सपेंसेस देखिए, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000 एंड नाउ लिसन दैट एसपीआर में से आप उसको राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 75,000 each। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 75,000 टू बैंक अकाउंट 75,000 एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। सेकंड जर्नल देखिए, लास्ट वाला जो जर्नल है अपना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 75,000 शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नाउ सी द बैंक अकाउंट। देखिए, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। डेबिट साइड में सारा रिसीविंग, क्रेडिट साइड में सारे खर्चे। In debit side, it is given ₹8 lakh for share application, ₹10 lakh for share allotment account, ₹4 lakh for share first call account, and ₹4 lakh again for share second and final call. This is the money that the company has received. Now move on to credit side. Buy share issue expenses account 75,000. Buy balance carried down, which is the balancing figure. 26 lakh minus 75,000, it is 25 lakh, 25,000, and then with the amount of rupees 26 lakhs, the account has been balanced। बैलेंस शीट पर आ जाते हैं बेटा। सी दिस इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज prepared, then notes to account they are also prepared। First number equity and liabilities, shareholders fund। A number share capital in current year, you can see ₹20 lakh। बी नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें अमाउंट लिखा है बेटे एसपीआर का। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का इट इज 5,25,000। टोटल अमाउंट इज 25,25,000 rupees। नाउ मूव ऑन टू एसेट्स। current assets, they are cash and cash equivalents, it is 25,25,000 rupees। notes to accounts, देखिए फर्स्ट नंबर पर अपन ने लिया शेयर कैपिटल। अथोराइज कैपिटल हमने इशू नहीं किया, उसको 2 लाइंस में हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया। शेयर कैपिटल अथोराइज क्या था, देखिए 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, it is 50 lakh। इशूड सब्सक्राइब्ड फुली पेड, ये था आपका 20 लाख रुपीस, यानी कि सारा ही आपको मिल गया। इसको भी 2 लाइन में हमने क्लोज कर दिया। रिजर्व्स एंड सरप्लस अमाउंट इज ऑफ रुपीस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दैट इज ऑफ ₹5,25,000। टोटल अमाउंट हो जाता है हमारा 25,25,000। थर्ड नंबर देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक, it is 25,25,000। the same amount is written in balance sheet, that was in previous slide। अब illustration number 7, in case of payment in lump sum। देखिए पेमेंट lump sum में हो गया बेटा। lump sum का मतलब क्या होता है जानिए। सी सत्यम लिमिटेड इनवाइट किया एप्लीकेशन 10,000 इक्विटी शेयर्स, ₹100 each at a premium of ₹20 each। होल अमाउंट में देखिए लमसम का मतलब होता है बेटा सारा पैसा। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, दिस इज नोन एज पेमेंट इन लमसम। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, यानी कि जितना शेयर हमने इशू किया वो सारे शेयर्स लोगों ने खरीद लिए।
and now you have to journalize. आपको journal entries pass करना है. It is illustration number 7. The condition is in case of payment in lump sum. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. देखिए अलॉटमेंट हमें साथ में लिखना रहेगा क्योंकि हम अलग से अलॉट कर ही नहीं रहे, हम यहीं पर उनको अलॉट भी कर रहे हैं. अदरवाइज में क्या था प्रीवियस स्लाइड्स में आपने क्या देखा बेटे कि डिफरेंट एंट्रीज वर डन फॉर अलॉटमेंट, बट लिसन जब सारा पैसा आपने एप्लीकेशन पर ले लिया तो अलॉटमेंट आपको यहीं पर लिखना होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. Application amount or money whatever received on 10,000 equity shares at the rate of rupees 120 per share. 10,000 into 120 it is 12 lakh and 12 lakh each. अब दोबारा देखो बेटा, जब बैंक डेबिट हो रहा है तो आपका SPR क्रेडिट नहीं हो रहा, ये अगले जर्नल में हो रहा है. सी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट रुपीज 12 lakh टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीज 10 lakh टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट रुपीज 2 lakh. Application money transferred to share capital and securities premium reserve account under subscription of shares. And now listen, what happens when see I have issued 100 shares, people have subscribed only 80. A condition is known as under subscription of shares. Sometimes the number of shares applied for by the public is less than the number of shares issued or offered by the company. Means issue is of more shares, public subscription is of less shares. Such an issue it is said to be under subscription, under subscribed. In such a case, the accounting entries are made on the number of shares applied for. अब इसको क्लियर किया है मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 9 से. देखिए शिवा लिमिटेड ने इशू किया 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. अभी देखिए एंड रुपीज 10 का 10% लोगे दैट विल बी प्रीमियम. प्रीमियम होगा यहाँ पर आपका ₹1. पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलोज. इट इज ऑन एप्लीकेशन ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम. इट मीन्स प्रीमियम द कंपनी इज रिसीविंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन. On allotment it is ₹4. On first and final call it is ₹2. And I hope that you might be getting. अभी देखो बेटे क्योंकि जो हमारा टॉपिक है that is going on for under subscription. Now you see आपने शेयर्स इशू किए 20,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 18,000 की, means issue is more and subscription is less. This is known as under subscription of shares. And one more thing, आपको जब 20,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला तो उसको हम जर्नल एंट्रीज में नहीं लेंगे. 18,000 shares will be taken while passing the journal entries. Applications were received for 18,000 shares and all were accepted. All money was duly received. अब आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है. पास जर्नल एंट्रीज, necessary journal entries in the books of the company. First number journal, bank account debit to share application 90,000 each. Application money received for 18,000. ये क्वेश्चन हमारा 18,000 से होगा बेटे. Basically this I wanted to tell you. सेकेंड नंबर जर्नल देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000, शेयर कैपिटल 72,000, SPR अकाउंट 18,000. ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ट्रांसफर हमने कर दिया एप्लीकेशन मनी का शेयर कैपिटल अकाउंट में. देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 72,000 टू शेयर कैपिटल. 72,000 अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. अमाउंट हमने अलॉटमेंट पर ड्यू किया है. एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट इसमें हम लेंगे ही नहीं. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 72,000 ईच. अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया अब यहाँ पर आपका. नाउ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब आप ड्यू कर रहे हैं, हम पैसा मांग रहे हैं अपने शेयर होल्डर से. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ₹36,000 का. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 36,000 each.
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, अब आपने उस पैसे को रिसीव कर लिया। नाउ सी द बैलेंस शीट, अगेन इट इज द सेम। बैलेंस शीट बिल्कुल आसान है बेटा, आप लोगों ने सभी ने बनानी करनी है। सी बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड, नाउ सी इट इज इक्विटी एंड liabilities, shareholders funds, शेयर कैपिटल आ गई आपकी 1,80,000 की, नोट नंबर 1 में it has been made clear. In reserves and surplus, the amount of security premium reserve has been taken. Assets, current assets, cash and cash equivalents, it is 1,98,000. Now see, शेयर कैपिटल में आ गया आपका नोट्स टू अकाउंट चल रहा है बेटे। अब इशूड शेयर कैपिटल 20,000 आपने इशू किया, उतना मिला नहीं, अकाउंट बंद कर दिया हमने। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 18,000, क्योंकि सारा पैसा आपको मिल गया, सो द अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड विद रुपीज 1,80,000. सेकेंड नंबर वर्किंग नोट रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 18,000, अकाउंट क्लोज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखिए ये जो पैसा आपको मिलता है कैश एट बैंक का, ये आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। व्हेन यू विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट एट योर ओन, देन यू विल गेट द अमाउंट ऑफ रुपीज 1,98,000. And now see third number, it is issue of shares for consideration other than cash. In this case, money is not received. हम पैसा रिसीव नहीं करते शेयर्स देने के, मान लीजिए हमने एसेट खरीदा, एसेट्स खरीदने के बाद में द कंपनी डिड नॉट पे मनी, रादर देन पेइंग मनी दे इशूड शेयर्स। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. It is not necessary to issue the shares for cash only. A company may issue fully paid shares for consideration other than cash. It means the activities will be done, but rather than the payment, shares will be issued. And the circumstances they are given to you. First number देखते हैं, हालात number 1, circumstance number 1, issue of shares to promoters. ये हमने पिछला वाला में भी किया था क्वेश्चंस में. Promoters of a company may be issued shares in the company for the services rendered by them rather than to pay money. हमने पैसा करने की जगह पर हमने उनको शेयर्स इशू किए. इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट्स या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स. एंड नाउ लिसन, सेकंड नंबर जो कंडीशन है सर्कमस्टांस है आपका दूसरा, हालात नंबर 1, हालात नंबर 1 वी हैव डन. Now move on to halat number 2. Issue of shares for the purchase of assets. अब आप क्या कर रहे हैं कि आप एसेट्स को खरीदेंगे एंड रादर देन टू पे मनी आप शेयर इशू कर देंगे बेटा शेयर्स. Sometimes a company purchases some assets and instead of making the payment to the vendors in the form of cash, it issues fully paid shares to the vendors. Following journal entries are passed for this purpose. Calls in arrear. And now listen what happens. See, जो आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश है वो आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में. Now move on to calls in arrear. It happens that some shareholder they fail to amount on allotment or call because it becomes when it becomes due. कारण नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं दिया. When amount is becoming due and the shareholder has failed to pay money, this condition situation is known as calls in arrear. There are two methods to deal with calls in arrear. First of all, without opening calls in arrear account. देखिए इस कंडीशन में आप calls in arrear account नहीं बनाते और हम क्या करते हैं बेटे पैसे को माइनस करके दिखा देते हैं. जो भी पैसा मुझे नहीं मिला उसको मैंने माइनस किया और दिखा दिया. Under this method, there is no need to open calls in arrear account. In such a case, the actual amount received from the shareholders is credited to the call account and the call account will show a debit balance equal to unpaid amount of the call. वो डेबिट बैलेंस आपको शो होता रहेगा लेकिन हमने अलग से नहीं लिखा कॉल्स इन एरिया.
on a subsequent date when the unpaid amount is received. देखिए, मान लीजिए कि कुछ समय के बाद में शेयर होल्डर के दिमाग में आता है कि नहीं पैसा पे कर दूं, वाई टू ट्रबल कंपनी, इन दिस केस बैंक डेबिट हो जाएगा और आपका रेलसी क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर हो जाएगा बेटे। पैसा आपने कॉल्स इन एरियर के अकाउंट के नाम से रिसीव कर लिया, then the entry can be done like this. Second number, by opening calls in area account under this method, calls in area account is opened and this account is debited with the amount with some amount of allotment. Sum का मतलब है जो पैसा हमें रिसीव नहीं हो रहा बेटे वो वाला पैसा इसमें आ जाएगा. When some amount of allotment or calls is not received. और फिर later date में क्या रहेगा, बाद वाली तारीख में क्या रहेगा, when the arrear amount is received, bank account is debited and the calls in arrear account will be credited. अगर पैसा हमको मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर होगा. यही आपने 1 में किया, यही आपने 2 में किया. फर्स्ट नंबर कंडीशन में हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं किया, सेकंड नंबर में हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट ओपन कर लिया, नॉट डेबिट, ओपन कर लिया बेटा. देन कॉल्स पेड इन एडवांस, कई बार में क्या रहता है, शेयर होल्डर फील्स कि क्या बार-बार में पैसा देना, एक साथ में सारा पैसा दे देना. A shareholder may sometimes pay a part or whole of the amount not yet called upon his shares in order to save himself the trouble of paying different calls at different time intervals. This is known as calls paid in advance. यानी कि फिर से सुन लो कि शेयर होल्डर से पैसा मांगा नहीं है, still he has paid the all amount or complete amount. This condition is known as calls paid in advance. This payment is done by shareholder. And now listen. अब क्या होगा बेटे कि amount of future calls is received in advance by the company. According to section 50, I am discussing calls in payment of calls in advance. Thus, the amount of future calls is received in advance by the company. According to section 50 of the Companies Act 2013, such amount of calls in advance can be accepted by the company only when it is so authorized by the articles of association. कॉल्स इन एडवांस का पैसा तभी आप रिसीव करेंगे जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, otherwise you cannot receive this amount. When the amount of calls in advance is received, it is credited to a newly opened account जिसका नाम रहेगा calls in advance, और एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू calls in advance अकाउंट, और नरेशन होगा calls received in advance. Calls in advance account is shown on the equity and liability side of the balance sheet. Under the main head that will be current liabilities and the subhead will be other current liabilities. In future, when the call is made by the directors, the following entries will be passed. अभी ये देखिए बेटा, सी कंडीशन उन्होंने क्या लिया है पढ़ते हैं एक बार. फर्स्ट नंबर जनरल देखिए, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. व्हेन द अमाउंट बिकम्स ड्यू ऑन कॉल, all shares including those on which call has been received in advance, आपने कॉल एडवांस में रिसीव कर लिया. यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर जनरल में आप उनसे पैसा शेयर कॉल का मांग रहे हैं. अब उन्होंने क्या किया है, पैसा आपको एडवांस में दे दिया, तो क्या लिखेंगे, सी बैंक अकाउंट डेबिट calls in advance account debit to share call. When you receive calls in advance amount, you will have to show it like this. And now listen to your homework. You will solve questions 5 to 7, then 10, 11, 15, 19 and 20. Very few questions I have given to you. Thank you so much.